jump हो गया. So snarks and starks का overview उसका हमने दिया. So Groth16, plonk, turbo plonk, FF plonk, all these things are type of snarks where they differ either by the way they are arithmetized or else by the way they are proven. The final proving step has taken place. So we won't be covering everything, but to give you a mathematical idea of how a proving system looks like, and to make you guys get the feel, we will kind of like Nikhil will guide you through building a simple simple example where you guys will do some R1CS circuit construction. ये जो सर्किट में चला जाता है ना, that उसका बैकएंड है प्लॉन्क और उसका बैकएंड तुम लोग चेंज भी कर सकते हैं Groth16 पे, which I guess like we'll share resources how to change the backend. But अभी Nikhil will be covering the Groth16 part, which is part of snarks. Okay. Okay, I'll start. So we have this arithmetic equation z equal to x plus 5. Z is publicly known and we want to prove that we know x without revealing it. Okay, so it's going to be a long ride. So these are the steps roughly which we are going to follow. First we'll convert the equation to a certain format, R1CS format. Then we'll convert the new equations into matrices. We'll convert the matrices to polynomials, and we'll compute the polynomial on a point, and we'll verify if the assertion LHS is equal to RHS. So अभी देखते हैं R1CS. So R1CS is a special type of constraint system. It's a equality constraint जिसमें सिर्फ एक multiplication होगा and no restriction on additions. Also it's compatible with bilinear pairings. That is, if we take two generator points G1 and G2, it will give a GT which cannot be used for another pairing. Basically it can be only multiplied once, like G1 into G2 gives GT, and GT cannot be used for anything else other than verification. Okay. Now let's take a look at witness vector. So witness vector is basically the signals of the circuit, basically the inputs of the circuit. So the vector is of n length. The first element is always 1. So just take this as an assumption right now. I'll explain this further. The value of all input, output and intermediate variables are present in the witness vector. So for example, z equal to x square y is a circuit. Okay. So now this has two multiplications, right? X into x and x square into y, right? There are two multiplications. So first we'll compress the multiplications into one. So we'll substitute x square with v1 and we'll substitute it in the original equation, z equal to v1y. Now there's only one multiplication. So our witness vector contains all the input, output and intermediate variables. So it contains every variable that we used here. One is the first element, 1 z, x, y and v1. Okay. So R1 CS system of equations. So this is a format of equations. So result is left into right, and the left and right elements have their own significance. So we cannot like shift the left element to right or vice versa. Okay. Now let's take a look at this example. Okay, we'll transform z equal to x into y. So here our result is z, our left variable is x, our right variable is y. So our witness vector will be 1 z, x and y, right? So we'll now place this into L and R matrices. Like let's say, I'll show you. Okay. So z equal to x into y. Our witness vector is 1 z, x and y. We want to convert this equation to matrices. So
in this format of A equal to L of A into R of A. Okay, so how will you convert them? We'll just do a simple matrix multiplication. We'll represent O this way. So O is Z, right? So the first element, so we'll just place 1 in the second index, and rest all elements should be 0, and obviously A will be multiplied. And similarly we can write L is X, so the third element will be the third index will be 1, rest all will be 0. And likewise for R, the fourth index will be 1, and we'll just multiply them. Are we clear till here? This is how we'll represent R1CS into a matrix. Any doubts? Because you'll understand that later. It's a part of the step. Like, see, first we'll convert the equation to a certain format, that which is R1CS, and our goal is now to convert the equations into matrices. Okay, and we have further steps. We'll get why we are doing this. Further slides. Multiplication operator is same. Okay. So now let's take something more complex. W equal to X, Y, Z, U. Okay. Write it here. W equal to X, Y, Z, U. So our witness vectors will be 1. Okay. So first we'll compress them. So let's compress them. Well, we can compress them in two ways. Either we can make V1 X into Y and V2 as Z into U, or we can also do it this way. V1 is equal to X into Y, V2 is equal to V1 into Z. Okay? Yes. These are the two ways that we can do. We can convert it into R1CS, but I'm only telling you these two ways because we are taking the left and right sides of the matrices seriously. It's a convention. Okay, so we have this witness vector IW's X, Y, Z, U, V1, V2, 8 terms. Okay, and we are taking the first one. So we'll get 3 equations, right? V1 equal to X into Y, and 3 of them are R1CS equations. Clear? Okay. Yes, order, well, order is important here, but it's necessary that you write it according to like the best possible way. I mean, if you put W somewhere in between, then it would be confusing, right? So it's better that you write it this way. Okay. So now let's convert this equation into L matrix, into matrices. Okay, we'll start by constructing the L matrix. Okay, so what are the L elements over here? Like in the 3 equations, what are the respective L elements? X, Z, and V1, right? Okay, so okay, I'll place the witness vectors here and the equation here. Okay, so we can construct the L matrix. So for the first equation, the first row, okay, so X, we have to just place the index of X as 1 and rest others as 0. And for the second equation, we have to place the index of Z as 1 and rest others as 0. And for the third equation, we have to place the index of V1 as 1 and rest others 0. Is this clear? Okay, let's move forward. Okay, now likewise we can construct the R and O matrices. Like for example, the R elements, let me show you the R elements. The R elements were Y, U and V2, right? So we are just filling ones in the according to witness vector.
So y, u and v2. Fourth is y, and from the second row, third last is u, and the last is v2. And likewise, we can do the same for o. And we have successfully constructed our matrices. Okay. There are. Okay. Okay. Now we have something to practice. So try these examples. I'll do it on the whiteboard side by side. I think start with, well, I'll show you the first one. I told you, right, like we are assuming 1 as the first element in the witness vector. The reason is because of constants. And the first example has constants, so I'll show you how to construct that one. Okay, we have z equal to x into y plus c, right? So for constructing the witness vector, we'll first move the c to the LHS side. So it becomes minus c plus z equal to x into y. Okay, so our rule was only one multiplication, no restrictions on additions. Okay, so one multiplication, no restriction on additions. So we can construct the witness vector this way. Now our witness vectors would be 1, z, x and y. Okay, now let's construct the L, R and O matrix. So our L matrix would be naturally 0, 0, 1 and 0. R matrix would be 0, 0, 0, 1. Now in the O matrix, we'll use this constant 1. Okay, minus c would be the first element and 1 would be the second element, third and fourth are zeros. Are we clear with this one? Because we'll multiply these three with the witness vector z, x, y. You can try multiplying them. Okay, you'll get this equation, right? Are you clear? What happened? Oh, I didn't stop. Okay. Okay, I think you can try the other three examples. Try and tell me if you have any doubts. We'll solve the fourth one. Zero. हो गया? In this case, you can also like switch these two matrices because obviously. Shall we move forward? Okay. So all the operations on RVSCS. Answer?
for Z equal to X. C is equal to which one? Z equal to X into C को पहले ले सकते हैं. X into cy, yep, c is a constant, so you can like put it anywhere and put it anywhere. Okay, so circuits are constructed using circom, and circom constructs R1CS circuits, and all the operations on R1CS are done on this finite field, and the prime number used for this finite field is this big, around the order of 2 raised to I think 254 or something like that, the order of BN128 curve, which is used by Ethereum. Okay, so all our further calculations will be done in this finite field. Okay, so now let's construct a small proof using what we have learned right now. So this is not a very secure and efficient way to do things. This is actually unsecure, whatever. So as you can see, the first matrix is like we constructed the first matrix. Now we'll just multiply the matrix and we'll get the second step over there. Clear? Right. Okay. Then we can write these three matrices in form of summations. Okay. It has m. Each matrix has m columns. Okay. So m columns. So we'll write the summation in this way. Okay, and we can like pick and choose each line from the matrix, each row from the matrix, and equate them directly. Okay, so this is not a very secure way, and also it's not efficient because we have to do so much calculation on the verifier side. Okay, and we have to, this is a succinct proof, right? So we have to keep things as low as possible on the verifier side. Okay. What's the difference between like didn't we just convert it back to where we started by again multiplying the matrices? Wait, like I'll go further. There is something more in this. I'll tell you. It's not over. So your question is answered here. The claim is I know x and y such that x into y equal to z. Okay. So 1 and z are public, but x and y are private. Okay. So we are hiding x and y. And for hiding them, the prover encrypts the witness by multiplying with both G1 and G2 generator. Okay. So prover multiplies G1 and G2 generator, which encrypts the X and Y value. Also it encrypts Z, but Z is already publicly known anyways. Okay. So this part is for like, how does the verifier know both the witnesses have same discrete logs? Okay, so we saw here that in this proof we are sending two witness vectors, each multiplied with one multiplied with G1 and one multiplied with G2, right? So how will the verifier know that we are sending him the sending the verifier the same witness vector? Okay. Right, this is a problem. Like a malicious prover can just use two different witness vectors. So how will the verifier verify it? So the verifier will multiply, like let's say the first witness vector had G1 multiplied to it, G1 generator point. So for that the verifier will multiply G2, and for the second witness vector the verifier will multiply G1. Okay, so G1 dot G2 gives us G12. So we can directly verify each row directly, right? Is it clear or shall I explain? Okay. So, okay, let's start from here. G1 and G2 generator points are like, you understood the path that we are multiplying the witness vector with two generator points separately, right? That point Okay. So let's say, Generator point कौन से फील्ड के?
जो हमने प्राइम लाइक ये तो एलिप्टिकल कर्व का जनरेटर पॉइंट है. एक ही जनरेटर पॉइंट, दो जनरेटर पॉइंट क्यों ले रहे हैं? नहीं, दो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बाइलिनियर पेयरिंग करने के लिए, टू मेक इट लाइक दिस वे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, राइट? बिकॉज एक जनरेटर पॉइंट होगा तो यू कैन इजीली गेस इट, राइट? Two generator point are the same thing. यस, ओके. बिकॉज एक जनरेटर पॉइंट हो गया, यू कैन गेस दैट, राइट? Actually you can brute force and guess that. This makes it more difficult to guess. Are you getting it? Like, okay, so let's say we have like let's say w1 as witness vector 1. Okay, you have multiplied the the multiplication would be w into g1. Okay, like you multiply the generator point with the witness vector. Okay, this is one of your inputs. Now the second input will be w2, which is w into g2, which is you're multiplying the witness vector with g2 generator point. Okay, are you clear till here? How is it relating to the equation which you derived, like OL and R matrices? अच्छा, ये हाँ आगे आगे लिंक होगा. ये छोटा सा पार्ट है. ये छोटे से पार्ट में ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज वेरीफायर को मैलिशियस इनपुट्स आ सकते हैं. ओके, इन दिस स्लाइड आई एम ट्राइंग टू से दैट वेरीफायर को मैलिशियस इनपुट आ सकता है. तो वो जनरेटर भी पास करते हैं साथ में? जनरेटर पब्लिकली एक्सेप्टेड होता है. हाँ, पब्लिकली एक्सेप्टेड होता है जनरेटर पॉइंट्स. ओके, वेरीफाई करने के लिए हाँ. डिस्क्रीट लॉग गेसेबल नहीं होने चाहिए. डिस्क्रीट लॉग इन दिस केस इज एक्स एंड वाई. ओके, विच शुड नॉट बी गेसेबल. ओके, वो गेसेबल नहीं होता. We are sending encrypted that way. When I'm multiplying generator points, that be encrypted. Z भी encrypt हो रहा है, but Z is already publicly known, so it doesn't matter, right? Okay, so in this page, I'm just trying to say that a verifier can get malicious inputs. So this is how the verifier will verify it. Okay, if both the witness, like let's say in W1, the witness vector used is different, and for the W2 the witness vector used is different. Okay, it won't match. Okay, that's what I'm trying to say. Okay, so finally, after the inputs come in, okay, so here, are you getting this point? Like, how did we come here? Wait, let me show you this equation. Okay, in this equation we have A1, right, which does not have generator points multiplied. Okay, here A1 are like the AI L1I, AI R1I, or AI O1I. Okay, does not have generator points multiplied to them. Okay, so now what exactly? The A1 and even is the AI are the coefficients? no, they are the witness vectors elements. The witness vectors elements. Okay, so here we haven't multiplied the generator points. Okay, now we'll multiply the generator points. We saw in these 2 pages, right? So now we are multiplying the generator points. Okay, now it's not AI, it's AI G1. Okay, and it's not AI, it's AI G2. Can you give an example of generator point in this? Like, it's a curve point basically. Like, you can just search it, you'll get the example. I mean, it's a number. Okay, it's a generator point is a number. I cannot give an example like that. It's a curve point. Okay, so now in the O1 part we have multiplied G1, right? AI GI. So for verifying this, we have to multiply G2 for the bilinear pairing to happen. Right? See, we are able to verify these two because bilinear pairing is happening. G1 happening, like G1 and G2 gives us G12. Okay, similarly here the bilinear pairing must happen for this to be verifiable, right? So here also we are like stripping row wise from these matrices and just comparing them directly. Okay, so this is not succinct. Okay, too much computation and too much data has to be passed down. Okay, so now let's construct a succinct proof. Okay, for this we need some prerequisite mathematics. Lagrange interpolation, I think we covered it, right?
Lagrange interpolation was covered. Yes, still I'll repeat it. Given some values x naught, y naught, okay, we have a couple of points, n plus 1 points. There exists a polynomial p with real coefficients satisfying the conditions p of xj is equal to y of j. Okay, so our goal of using the Lagrange interpolation is to generate a polynomial with the lowest degree. Okay, it's easy to generate a polynomial if you have the points manually, but we need the lowest degree. Okay, for the lowest computations to happen, we need the lowest degree. That's why we are using Lagrange interpolation. Okay, so is this clear? The definition clear, or should I repeat it? Clear, right? Okay. So this is the formula. Just take a look at it once, because I mean we are not going to use it, use the formula here, but we'll use it in the code. We'll just loop it over. Okay, so this is how we calculate like the interpolated polynomial using the given points. So now let's take an example. X naught and y naught equal to 1, 2, and x1 and y1 is 3, 4. So here in the formula, we have to just use the first term of this formula, right? Because we have only 2 points. Sorry, first 2 terms of this formula, because we have the first we have only 2 points. Okay, so we'll substitute these points here and we'll get the polynomial. As you can see, a degree of the polynomial is smaller than or equal to n plus 1. Okay, and it is smaller than, right? We have 2 points and our degree is smaller than 2. Okay, it's a straight line. Are we clear with Lagrange interpolation? Okay. Now let's take a look at slow करना है क्या? Slow करना है? Okay. Lagrange, is it clear? Or should I repeat it again? Should I repeat the example on the board? Okay. So I'll move forward. Okay. Let's take a look at Schwarz-Zippel lemma. So this is the most important theorem used in succinct proofs, because this is what makes the proof succinct. So that's why nearly all GK proofs rely on Schwarz-Zippel lemma for succinctness. Okay, so we have 2 polynomials, Px and Qx, and their respective degrees are dp and dq. Okay, so the number of points where Px and Qx intersect is less than or equal to the maximum of dp and dq. Like, take a minute to comprehend this. I'll show you an example also. Okay, so is this clear? So we'll use this because we don't want to manually check each coefficient like this. Okay, here we are checking each coefficient, which was really inefficient. We can use this lemma to make it very efficient, like comparatively very efficient. This is intuitive. Because if we like subtract and equate to 0, a polynomial can have at max real roots equal to the degree. Yes. And it will be max. Yes, that's why. Yep. Okay. So, So in this, we pick a number from the finite field, a random value u from 0 to p. P is the prime number of the finite field. Okay. So we'll compute the 2 polynomials yf and yg. Okay. So yf's computation is f of u and yg's computation of is g of u. You're just putting the u point in the equation. If y of f equal to y of g, then if y of f equal to y of g, there's a chance that both the polynomials are same, but there's also a slim chance that both the polynomials are not the same. Okay, but okay,
So first let's take a look at this example. Okay, we have only 2 points of intersection. Okay, which is like our finite field is quite big. We can choose any x point from our finite field. Compared to that, only 2 points are intersecting in this curve. Okay, the probability is quite less. We'll see that here. Okay, if degree is way smaller than the prime number of our field, then situation 2 is very unlikely to happen. Okay, it's negligible. It'll never happen mostly. Okay, and our like as we saw before, our prime number is of order 2 raised to 254. Okay, so now let's take an example like why the second case is unlikely to happen. Okay, for a polynomial, like not more than a million degree, like a polynomial with a million degree is quite big, right? So we are calculating the probability of where they intersect. So if we randomly choose a point in the finite field and two curves which are not the same intersect at that point, the probability of that intersection is 1 by 10 raised to 70. Okay, so basically this says that in almost all the cases the two curves will be the same. Are we clear? Okay, see, for reference, to put things in perspective for your senses, number of atoms in the universe is 10 raised to 80. Okay, so you can see the probability of wrong things happening, like it's quite low. Okay, so we can take the risk. Actually, this risk improves a lot of things, so this is a good trade-off actually. Okay, so are we clear till here? The basic mathematics. If you have any doubt, you can just stop me in between and ask. Clear? 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 Yes. No. Like they can be. We are not imposing any condition on them. Okay. We are just saying that. Let's take two curves. Okay. We choose a random value u from our finite field, and we insert that value in our function f of x and g of x. Okay. So, like if they come out to be same, like if the values come out to be same, there's a chance that both the curves are same, and there's also a chance that both the curves are not same. Okay, and we were just discussing the chances of the curves not being the same. Like yes, okay, which is very low, 1 by 10 raised to 70, right? How exactly will we be using this f and g in what context? Okay, so I'll tell you one. Okay, so here, oh, what the hell? Huh. See here we are directly. See here we are directly calculating the, like comparing the coefficients, right? We'll construct a polynomial using them and then input this value and compare the left hand side and right hand side. Like this is the plan. That's why we are constructing the matrices. Okay, so we need to take a look at representing a dot v in a different format so that we can easily construct a polynomial using them. Okay, so a11, this is our matrix a11 a12. Okay, it's a 3 cross 4 matrix and we have a vector of 4 elements v1 v2 v3 v4. Okay, we'll just do a matrix multiplication. Okay, are we clear? Okay, so we can also, like, now what we'll do is after we multiply this, we can break this into like a scalar into multiplication and a vector addition, right? Take a look at the second step. Okay, we have multiplied the matrix, now we are breaking it into scalar multiplication and a vector and multiple vector additions. Okay, are we clear with this representation? Because we will be using them later. Okay, now we'll succinctly test
AV1 equal to BV2. Here we'll use the Schwarzschild lemma further. Okay, this is an example. So 6 3 4 7 and B has 3 9 12 16. So we'll like represent the A dot V1 and B dot V2 in this format. Okay, are we clear? Clear, right? Okay. So now we'll use Lagrange interpolation for interpolating polynomials for each of these rows, like each of these vectors in the last step. Okay. So the first one is named as P1x and the second is P2x, third is Q1x and fourth is Q2x. Okay. We'll have four polynomials constructed. So we'll use, What are the points used to construct? yes, 1 comma 2. We'll just, our goal is to construct a polynomial uniformly. Like, are you getting it? Like if we construct a polynomial here using 1 comma 2, then we have to construct all the polynomials using 1 comma 2. Okay, like Any point but subclassification. yes, but 1 comma 2 comma 1 to n is easier, right? N is the rows, like n comma n matrices, right? All the matrices are of n comma m dimension. Okay, so we are using 1 to n numbers for constructing the polynomial using Lagrange interpolation. Okay, इसमें पेयर क्या है x, y? x comma y, yep. See, y तो है अपने पास, yeah. So x हम लोग assume कर रहे हैं 1 से n तक, and n is the row of the matrix. सारे x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होएगा ना पे। हाँ हाँ। इस वर्ग को 6 से पेयर कर दो, Yes. उसको 4 से पेयर कर दो। Like see here, यहाँ पे जो 1 है ना वो 6 से पेयर होगा and 4 जो है 2 से पेयर होगा, and वैसे ही 3 जो है 1 से पेयर होगा and 7 जो है 2 से, yep, likewise. Okay, so ऐसे करके we'll construct 4 polynomials. Are we clear till here? Like अगर repeat करना है तो बोलो cause memory space कम पड़ सकता है. हाँ, Lagrange interpolation यूज करके. See, जो मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ये समझ में आया ना? So we are representing it in this way. So we need to construct 4 polynomials, okay, because we have 4 columns. Okay, And how you choose the point? पॉलिनोमियल्स जो है वो बेसिकली आप जस्ट मतलब क्योंकि दो ही पॉइंट्स आपने लिया तो वो लीनियर ही आ रहा है बेसिकली, बट वो लीनियर पॉलिनोमियल एंड एट्रिब्यूट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं है ना वो पॉलिनोमियल्स को। जो पॉलिनोमियल्स जनरेट करता है इक्वेशन से, okay, वो एज इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं ना, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है at this point. This is a polynomial, okay. मतलब बस जैसे 3x + 2 हाँ, yep, ऐसे टाइप का होगा. Okay, at this point. हाँ, point like 1 comma 2 1 comma n, like 1 to n रहेगा points. Okay, x के point जो है 1 से n रहेंगे and y के जो points है वो तो दिए हुए हैं 6 and 4. ठीक है, पहले वाले का, एंड दूसरे का y पॉइंट है 3 and 7, थर्ड का y पॉइंट है 3 and 12 एंड फोर्थ का y पॉइंट है 9 and 6. ओके, सो वी नीड ओनली uniform x values which we will use across all the vectors. Okay, so for uniformity and ease of use 1 से n लेंगे, n is the row, okay, of the matrix. So we are constructing the polynomials like this. Clear? Okay. So yep, this is R1 CS2 QAP. This is how we do it. And here, like आगे बताऊंगा, like we'll use Schwarzschild lemma by, like you can see this, right? We can substitute a value and we can check if the equality holds. Clear? Right. पूरे फंक्शंस हो गए LHS। हाँ, LHS and RHS है. Schwarzschild lemma use करके we can like check if the curve on the left is equal to the curve on the right. Right? Okay. लेकिन इस केस में तो डिग्री इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, डिग्री इतनी बड़ी नहीं है बट होगा. वो Okay. यप, काफ़ी बड़ा डिग्री होगा. Like
इसके लिए feasible नहीं मतलब इस but उनकी what validity exactly? के लिए तो polynomial calculate करना ही बहुत ज़्यादा हाँ बट इट्स हैपनिंग ऑन द प्रूवर साइड ना, वेरीफायर के लिए इजी है. यस, कंप्यूटेशंस वो प्रूवर तो साइड. एक वैल्यू पे पूछता है but हाँ एग्जैक्टली एक वैल्यू पे बस चेक होता है एंड कंफर्म होता है, बिकॉज दो कर्व्स ना होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, सेम होने का प्रोबेबिलिटी लाइक दो कर्व्स लाइक डिफरेंट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है जाती है. ओके सेम होने का बहुत ज़्यादा हाई है, सो विल जस्ट चेक इट ओवर वन पॉइंट. हाँ हमारी कंक्लूजन तो यही है ना कि अगर डिफरेंट आया तो मतलब नहीं इक्वल नहीं डिफरेंट आया, अच्छा यू मीन इफ एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, हाँ देन तो श्योर शॉट नहीं है, देन तो श्योर शॉट नहीं है. ओके वेरीफायर के पास कौन सा पार्ट रहता है polynomial इसमें ये कोई नहीं होती सारा लाइक इसमें अभी के लिए डोंट थिंक कि किसके पास कौन सा एलिमेंट है, वो मैं बताता हूँ. ठीक है, दिस इज लाइक अभी मैथमेटिकल पार्ट, आगे जाके आई विल से किसके पास कौन सा वैल्यूज है. ओके सो बिकॉज आगे ट्रस्टेड सेटअप एंड ऑल भी आएगा, उसमें भी कंप्यूटेशंस एंड ऑल होते हैं, दैट्स व्हाई. सो यही जो हमने किया था, वी इंटरपोलेट द m columns like on 1 comma 2 to n, and we have m polynomials. Okay, I think this is clear, right? This is generalized format. I explained using an example. Okay, so we'll compress the LA into the summation format this way. We'll first multiply the matrices, and then we'll interpolate the polynomial using Lagrange interpolation and construct the polynomials, and then compress them using the summation formula. Clear this part? Indexes वगैरह देख लेना. Okay, I think I can move forward. Okay, so as we did to the left hand side of the matrix, right hand side and the result matrix hand can also be compressed this way. Okay, we are further compressing by writing the L as Ux and the RA as Vx and the O as Wx. Okay, and our now we have successfully converted our matrices to polynomial form. Okay, I presented the analogy below. But there is an issue. Can you tell me what's the issue over here? Like I've written the numbers over there. हाँ डिग्रीज मैच नहीं होंगे. ओके बिकॉज L R and O का डिमेंशन सेम था, the polynomials that will interpolate and generate will have same degrees, like maximum same degrees, like n minus 1 max, n minus 1 max and n minus 1 max. But now we are also multiplying U with V. Okay, so now our maximum degree on the LHS side is 2n minus 2, right? Yep, correct. So for solving this issue, we need to introduce a solution. We'll introduce another polynomial bx, which is also called as forced zero vector. Okay, I'll expand further. So our final equation, like kind of right for now, it becomes ux vx equal to wx and a bx term with balances out the degrees. Okay, what exactly is हाँ अभी बताऊंगा. Okay, so bx is the forced zero vector, okay, because of the tx term. Okay, so bx consists two terms, tx and h of x. Okay, so tx is already defined, x minus 1, x minus 2 to x minus n. Okay, n is the row of the matrix. Clear? ये already solutions होने चाहिए Yep. On इसमें because we interpolated the polynomials over 1 to n. इस इन पॉइंट्स पे किए थे Yep, that's why this is force zero vector. Okay, right, that's why we were interpolating over 1 to n, because it makes things easier this way. And all the points that we interpolated were also like unique, right? That's why. And for hx to be computed,
like are we getting why we are like having the hx term? Because let's say if the 4 0 vector, we are calculating the polynomial on some other x other than like 1 to n, the 4 0 vector won't be 0. To balance that out, we have another polynomial multiplied to it, h of x. Okay, so we can directly use this equation to compute our h of x. लेकिन फिर इसको अगर यही नहीं लग रहा कि हम ux vx equal to ux vx लिख रहे हैं What? क्योंकि ux? dx hx is मतलब हमने उसी एक्सप्रेशन से तो अभी डिराइव किया है नहीं, but we are introducing a new value, right? I know circular substitution. हाँ, circular substitution नहीं होगा because we are introducing a new value bx. Okay, circular substitution जब होता है when you are introducing nothing. ठीक है, we are introducing tx. ठीक है, we are introducing tx and then finding out hx. but hx also has tx in the denominator so it won't नहीं, because like let me put it this way, okay? So let's say you have तो dx की वैल्यू आपने घुमा फिरा के u नहीं घुमा फिरा के नहीं डाला है, that's what I'm saying. We are introducing a new value, right? अब we have to find h of x. लेकिन उस न्यू वैल्यू को यूज करके ही तो हमने h of x निकाला और हमें एक्सप्रेशन में फाइनली v of x लिखना है हाँ. hx टाइम्स See, let's say ऐसे बोलते हैं ना, you have LHS and RHS, okay? अभी RHS का value is changeable, okay? Now you add something on RHS, okay? And now you'll have to subtract something from the RHS, right? Like कुछ तो करना पड़ेगा change. So how will you find the new value, like which you have to subtract? You will move all the things from RHS to LHS except that value, right? That's what we are technically doing here. We are introducing a new value tx, right? Are you getting it? but we vx are just calculating x introduce नहीं कर रहे basically नहीं, tx तो इंट्रोड्यूस करा है ना, इट्स डिफाइंड. हाँ, hx कैलकुलेट कर रहे हैं एंड hx सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि t of x हम डिफाइन कर रहे हैं नया. ओके, इट्स नॉट इन द ओरिजिनल इक्वेशन. और अपना ओरिजिनल इक्वालिटी था, दिस वाज आवर ओरिजिनल इक्वालिटी काइंड ऑफ. ओके, is a new thing but what is being substituted in the equation is bx and bx is tx times h. हाँ, in the bx tx is something new, that's why we are able to find hx. Are you getting it? Like dx हाँ. into hx will be हाँ, only one tx into hf so independent of tx dx minus wx independent, like repeat again. dx into hx हाँ. equal to ux vx minus wx मतलब एक हाँ. bx equal to ux bx minus wx. हाँ, या bx is equal to ux, वो तो है ही, राइट? वही हो रहा है, सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ. tx का यूज कहाँ है क्या tx का इक्वेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होएगी ना वैल्यू होगी बिकॉज देख टेक्निकली वेट अ मिनट, देख दिक्कत क्या हो रहा था समझा? लाइक जो मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयर कर रहे थे उसमें x का कोई पावर नहीं था. ओके, अब जैसे हम लोग ने पॉलिनोमियल में डाल दिया x हैज अ पावर, राइट? एक नया एलिमेंट आ गया, लाइक x हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे विच हैज अ पावर, ठीक है? एंड लेफ्ट साइड पे वो x का जो पावर है वो ज़्यादा हो गया है. बिकॉज ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोग ने राइट साइड पे जो है, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में विच इज रिजल्ट ऑफ o, लाइक o है, उसमें हम लोग ने x को एक बार इंट्रोड्यूस किया, लाइक एंड LHS में हमने x को 2 बार इंट्रोड्यूस किया है. आर यू गेटिंग इट? लाइक एक बार इसको पॉलिनोमियल बनाया, इससे एक अलग पावर आया x का, एंड इससे और एक बार पावर आया x का. हाँ वो तो क्लियर ठीक है, 2 बार x का पावर, लाइक डबल हो गया x का पावर ऑन LHS. हम लोग ने जब पॉलिनोमियल बना रहे हो उससे मैट्रिसेस तो ये इक्वेशन ही होल्ड नहीं कर रही ना, मतलब आप उससे वो नहीं लिख सकते लाइक जब आप हाँ, मैट्रिक्स से फॉर्म ये टेक्निकली इक्वल टू नहीं होना चाहिए इसमें. वैल्यूज पे इक्वल है ना लेकिन जो 1 to n हाँ, लाइक स्पेसिफिक वैल्यूज में इक्वल होंगे 1 to n. ठीक है, हमने 1 to n में इंटरपोलेट किया था, 1 to n में इसलिए वो सेम होंगे, राइट? एंड हम लोग ने 1 to n इंटरपोलेट किया इसलिए वो उस 1 to n में ये होल्ड करता है, समझ रहे हो? बट हमने अदर वैल्यूज में चेक नहीं किया, समझ रहे हो? पॉइंट बस ये है कि अगर जैसे हम bx को tx into hx डिफाइन करते ओके, हैं तो उसके बाद हम गारंटी नहीं कर रहे कि सारे x पे सेम ही आएगा LHS RHS क्योंकि bx डिफाइन ही ऐसा हुआ है
कि वो सेम मेंटेन करे। वेट रिपीट, लाइक यू आर सेइंग कि LHS एंड RHS सेम नहीं आने का चांस है? नहीं सेम ही आने का। हाँ सेम ही आएगा, वही चाहिए। मतलब वही सर BX कैलकुलेट कैसे करना है? BX कैलकुलेट मतलब देख, BX के दो पार्ट्स है, वन इज TX, ओके, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड। सर इसके आगे क्या करेंगे? मतलब वो एक दो नहीं नहीं वेट, सर्कुलर नहीं नहीं, लाइक देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन ना। एक बार थोड़ा सा आगे पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, ओके विल कम बैक हियर, ओके ओके, जस्ट सेइंग दैट इट्स नॉट सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन, ओके। हाँ सो वही है, वी हैव रिप्रेजेंटेड लाइक वी गेट द फाइनल इक्वेशन दिस वे, ठीक है, A इंटू बी इक्वल टू सी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, ओके। जो RHS में जो भी है सब मिला के C है, ओके, दिस वे, जो अभी देखा था रिप्रेजेंटेशन वही है। हाँ सो नाउ लेट्स ओपन दिस टर्म्स, ओके, विद an example. So जो we are opening the L part, which is A part, or like the UIX part, okay. So A1 के साथ there will be a unique polynomial, A2 के साथ there will be a unique polynomial, A3 के साथ unique one and A4 के साथ unique one, right? Okay, A4 miss हो गया but वहाँ A4 है, right? And we'll club the terms together according to the power of the x, okay. We'll club the terms together, and after clubbing the terms we'll get the third last equation from here, okay. We'll get this after we club the powers and change the coefficient, okay. U of 2a, are you getting it or should I write it on the board? Okay, I'll show you on the board. वो तो ठीक है। हाँ सी बेसिकली रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स, एंड जो वो होगा ना, वेट आई शो यू, जो ये हो रहा है, ये पार्ट तो ठीक है, बेसिक है। हाँ बेसिक ही है, हाँ बेसिक ही है, यस, ठीक है। हाँ ओके, आगे बढ़ाते हैं, चले। नहीं तेजस्वी को डाउट था ना, कोई क्या था? मैं एक मिनट में समझा UI हाँ। वो तो UI क्या था दोबारा से बता। UI पॉलिनोमियल्स थे जो, वेट पीछे आके दिखाता हूँ तुझे, ओके, लाइक लेट मी शो यू दिस, वाओ ब्यूटीफुल। हाँ देख, यहाँ पे जो हमने वो किया था ना, पॉलिनोमियल्स अलग अलग से बनाए थे, ये है UI ऑफ x, समझ रहे हो, जो अलग अलग से इंटरपोलेट करके बनाया था, डिस्ट्रीब्यूट करके, लाइक हाँ हाँ समझ रहे हो, वो A.V हमने किया था ना, रिप्रेजेंटिंग इन, वेट आगे आता है ना ये, वेट वो पेज तक आने दो, हाँ अब बता ना। वो 1 to n इसमें कहाँ से आ गया? आपने तो बस ये लिखा है कि वो L1 की corresponding ऊपर next to B इसमें था। मेरे को समझा नहीं एग्जैक्टली 1 to n कहाँ से वाले स्लाइड में अगर आप देखी होगे तो उसमें था हाँ। कि वो कुछ था AI UI का ही था, ओके, बट एक्चुअल मैट्रिक्स फॉर्म में वो L11 L12 ऐसे लिखा था। अच्छा वो मैट्रिक्स फॉर्म में था, ओके, मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग लाइक पॉलिनोमियल में इंटरपोलेट कर रहे हैं, हाँ, कैसे? फिर अच्छा ठीक है, 1 to n कहाँ से आ गया? 1 to n तो उसका रो है, लाइक n रोज है, n रोज हाँ। है, n कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना रैंडम। नहीं रैंडमली नहीं ले सकते, नहीं 1 से n इसलिए ले रहे हैं बिकॉज n जो है वो रो का नंबर है, लाइक रोज इन द मैट्रिसेस, हाँ ले सकते हैं, यू आर सेइंग कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं ले, लाइक हाँ, इट्स बिकॉज इट मेक्स थिंग्स सिंपलर, लाइक यू कैन टेक एनी रैंडम n वैल्यू बट एवरीबडी हैज टू अग्री ऑन दैट, राइट। जितना ज़्यादा अलग अलग वैल्यूज में हर लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अग्री करेंगे, उतना ज़्यादा वो लाइक कंप्यूटेशंस होंगे, राइट। उससे अच्छा कोई चीज़ों को लाइक सीधा सीधा वो एज अ क्या बोलते हैं कन्वेंशन रख सकते हैं, राइट। एज अ कन्वेंशन हम लोग 1 to n लेते हैं, कोड लिखने में आसानी पड़ गया। एग्जैक्टली, नहीं तो हर पॉइंट में अगर तुम लोग यूनिकनेस रखोगे, लाइक जहाँ यूनिकनेस चाहिए वहाँ रख सकते हैं, राइट। हर पॉइंट में अगर यूनिकनेस रखेंगे तो वो वैल्यूज सबके साथ अग्री होना पड़ेगा। रिपीट, रिलेशन कहाँ है? 1 से n पे वैल्यूज एग्जैक्टली कहाँ? अच्छा ओके, सो लैग्रांज इंटरपोलेशन हो रहा है, वेट आई विल शो यू, ये वाले स्लाइड में ना वो, वेट हाँ हाँ हाँ, ये वाला स्लाइड ही है ना, सी
यहाँ पे कैसे रिलेशन आ रहा है. ओके यहाँ पे साइज जो है रो का 2 है. ओके सो n is equal to 2, right? n is equal to 2, so we are taking 1 and 2. ओके सो ये जो है y के वैल्यूज है एंड ये x के वैल्यूज है जो हम लोग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, राइट? सो you have the points 1,6 and 2,4. Now using this you can apply Lagrange interpolation. I don't know what's happening, but like you remember the Lagrange interpolation formula or should I हाँ yep वही यूज करके हम लोग इंटरपोलेट कर रहे हैं. ओके लाइक कहाँ गया, हाँ सो वही यूज करके हम लोग इंटरपोलेट कर रहे हैं. वी हैव 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स यूज करके हम लोग इंटरपोलेट कर रहे हैं. दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल. लाइक अभी समझ में आया क्यों हम लोग. हाँ पर ये तो इस एग्जांपल के लिए है LA into RA is equal to OA, तो उसमें जैसे कि LA का आपने लिखा था तो उसमें एग्जैक्टली कहाँ है? अच्छा ओके 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 सो ये एग्जांपल में माय गोल वाज टू शो यू कि कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ब्रेक करके इक्वेट कर रहे हैं. ओके सो आगे देखते हैं. हाँ सो यहाँ पे आ जाना, ठीक है. सो यहाँ पे यू रिमेंबर द ब्रेकिंग द A डॉट V इंटू ओके वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीपल एडिशन फॉर्मेट, राइट? हाँ सो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. ये A है और तुम्हारा ये V है. ओके यू आर जस्ट ब्रेकिंग देम डाउन दिस वे. U1 of x is like L11 L21 L31. हाँ एंड उनको इंटरपोलेट करके तुम्हें U1 आता है, U1x. यहाँ पे तुम लोग कैसे इंटरपोलेट करोगे, लाइक यहाँ n इज इक्वल टू 3, राइट? ओके लाइक लेट्स सी I'll map the interpolation for you. Okay so L11 gets interpolated with 1, L21 gets interpolated with 2, L31 gets interpolated with 3. This is your U1x. हाँ तो U1 of 1 is L11, U1 of 2 is L21, ऐसा कुछ है. L231. ये जो U2 है वो इन तीनों का है. हाँ हाँ मतलब U1 हाँ. of 3 is L31. U हाँ ये पूरे इसका L31 का नहीं है, L11 to L31 तक का है ये U1x. ओके मतलब corresponding values है ना इस function में. corresponding columns. हाँ columns L1 corresponding L2, columns L3. interpolated over range of the rows, ये right? देखो N rows है. हाँ. तो 1 to N correspondingly U1 के जैसे 1 U1 1 U1 2 and U1 at 3. U1 हाँ. evaluated at 3 हाँ, हाँ, is हाँ. L31. हाँ U1 मतलब evaluate like हाँ confirm कर रहे थे बस. हाँ हाँ ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है समझ में आ जाएगा वैसे. ओके सो एग्जैक्ट डाउट क्या था, लाइक सर्कुलर सब्स्टिट्यूशन का ही था ना. जीरो नहीं होगा जीरो. हाँ हाँ मैं बोर्ड में दिखा दूंगा. ओके आफ्टर सम टाइम वेट. फर्स्ट हम लोग कहाँ थे, याद है ना? हाँ ओके सो डिड यू ऑल गेट दिस. यहाँ पे हम लोग ने टर्म्स को बस टर्म्स को किया अकॉर्डिंग टू पावर्स ऑफ एक्स. ओके एंड लाइकवाइज 3 अपने पास आ गए, राइट? ओके we can move further I guess. Okay so trusted setup वाला part. Okay so यहाँ पे we'll use trusted setup to compute these 3 polynomials. Okay अब I'll tell you how trusted setup works. Okay so G1 and G2 points are universal, right? ओके सी यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ओके अब नया इस पे जा रहे हैं. क्या किसमें प्रीवियस इसमें ये अच्छा अब पढ़ा रहा हूँ, ये अभी पढ़ा रहा हूँ. ओके सो इसमें सी आवर गोल इज टू कंप्यूट दिस 3. तो हम लोग को क्या करना है, ट्रस्टेड सेटअप पे 3 वैल्यूज लाने हैं, राइट? 1 is for like x raised to 0, 1 is for x raised to 1 and 1 is for x raised to 2 across
3 of the equations, right? हाँ, so एक trusted setup एक setup है which is a third party setup. Neither the prover nor the verifier like owns it. It's a third party decentralized setup जहाँ values compute होके आते हैं. Okay, वहाँ पे कौन से values compute होते हैं? The x that we have to substitute. Okay, जो यहाँ पे x compute होगा वो prover के पास जाएगा. Okay, इसलिए trusted setup use करते हैं क्योंकि बस ये arrays को compute करने के लिए. Okay, so G1 generator point. Okay, so prover verifier है. हाँ, राइट, प्रूवर और वेरीफायर है जो यूजर्स है. ओके, ट्रस्टेड सेटअप एक टेक्निकली एक सिस्टम है काइंड ऑफ जो सिर्फ वैल्यूज कंप्यूट करके देगा फॉर एक्स जो हम यूज करेंगे. मतलब एक थर्ड पार्टी सेटअप ही है. अरे रियल लाइफ मतलब Groth16 यूज जहाँ भी होता है वहाँ पे सेटअप पे ही होता है वो. मतलब यू कैन रन अ लाइक ट्रस्टेड सेटअप नोड. ये नोटेशन समझ रहे हो? Who runs this? मतलब नोड्स ही है. नोड्स में है, नोड्स में यू कैन रन वेरीफायर नोड. ट्रस्टेड सेटअप लाइक हाँ नोड्स ही रन करती है. ओके, नोड्स कंप्यूट करती है ये. हाँ 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 वो बता वो जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के रिप्रेजेंटेशन है वो मतलब वो मैट्रिक्स मतलब कॉम्पैक्टेड फॉर्म नहीं है ना कोई. मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे वेक्टर है, जस्ट ए वेक्टर है जो प्रूवर को जाएगा बाद में ट्रांसफर होगा. मतलब वो इंफॉर्मेशन बस पास हाँ करते हैं फॉर्म. हाँ हाँ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं अरे के फॉर्म में. दैट्स व्हाई ऐसे किया, लाइक नो स्ट्रिक्ट लाइक रूल्स अराउंड दिस. सो ओके, सो कैसे पास ये कंप्यूट होगा? सो ट्रस्टेड सेटअप फर्स्ट अज्यूम्स अ रैंडम वैल्यू जो भी है टाउ. ओके, रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. एंड अपने पास G1 जनरेटर पॉइंट है एंड G2 जनरेटर पॉइंट है विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. सो the first set of values that trusted setup computes is omega 2, omega 1 and G1. Okay, and the second set of values is using the generator point 2, theta 2, theta 1 and G2. Okay, we need 3 values इसलिए trusted setup is computing 3 तो वेट ये G1 G2 तो generator points है. हाँ तो बिलोंग्स टू जनरेटर पॉइंट का क्या मतलब है? उससे जनरेटेड फील्ड का हाँ बिलोंग सी जनरेटर पॉइंट से जो वो होगा वो उसके जनरेटर पॉइंट के फील्ड में होगा ना. जनरेटर पॉइंट से जो फील्ड जनरेट हुआ उससे बिलोंग. हाँ एग्जैक्टली. Theta to theta का मतलब x y value. हाँ 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 पॉइंट वैल्यूज है पॉइंट्स. Generator point का x y value. हाँ जनरेटर पॉइंट का x, y वैल्यू. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक अलग अलग क्या क्या जनरेटर पॉइंट तो आपका एक ही है ना x y को. जनरेटर x1 y1 और G2 हाँ 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 ऐसे ही है बट फील्ड अलग अलग होंगे. लाइक जनरेटर 1 का फील्ड अलग होगा, जनरेटर 2 का फील्ड अलग होगा. हां इससे मतलब उसके फील्ड में कोई भी हाँ कोई भी एक एलिमेंट. ओके, सो वही है कि ओमेगा 1 ओमेगा आई जो है हाँ हाँ कर्व का पॉइंट है, फील्ड है कर्व का पॉइंट है. स्टार्टिंग में आपने बोला नहीं था G1 G2 सेम फील्ड के जनरेटर पॉइंट है. अरे वो मैं अलग बोला से ग्रुप जनरेट करते हैं. कंप्यूटेशन का था क्या वो? मैं कंप्यूटेशन का बोलाऊंगा लाइक फाइनाइट प्राइम मतलब नंबर जब आपने अरे वो अभी इलेक्ट्रिकल वो अलग लाइक उसमें था ना. अच्छा ओके, सो कंप्यूटेशन का बोल रहा था कि सेम फाइनाइट फील्ड में होते हैं. ये G1 G2 ये एक अलग कर्व पॉइंट है, जनरेटर पॉइंट है जो G1 का कर्व पे लाई करेगा एंड G2 को अपने कर्व पे लाई करेगा बस. तो ये जो पास हाँ ये मतलब ये जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया G1 G2 हाँ इज लाइक वो G1 G2 किस बेसिस पे मतलब वो रैंडमली कोई भी जनरेटर पॉइंट्स उसने नहीं वो एक्सेप्टेड होता है. लाइक तीनों के अक्रॉस एक्सेप्टेड होता है. प्रूवर, वेरीफायर एंड जो ट्रस्टेड सेटअप है तीनों के बीच में एक्सेप्टेड होता है G1 G2. कि हम ये G1 हाँ यस. जीवन हाउ मेनी पास जीवन है तो जीवन एक्सेप्टेड है पहले से एक्सेप्टेड है लाइक. हाँ जीवन है तो मतलब मैट्रिक्स है ना. नहीं जीवन मैट्रिक्स नहीं है, जीवन तो पॉइंट है G1 एंड G2. वही पॉइंट. हाँ मैट्रिक्स में पॉइंट जीवन ये मैट्रिक्स में पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे मैट्रिक्स में पॉइंट कहाँ पे? अब वेक्टर वेक्टर में पॉइंट नहीं है. यू आर मल्टीप्लाइंग. सी व्हाट आई टोल्ड, यू आर लाइक रैंडमली जनरेट द ट्रस्टेड सेटअप इज रैंडमली जनरेटिंग अ टाउ. ओके, टाउ वैल्यू and it's multiplying the scalar with the generator point. Like scalar into point multiplication हो रहा है. Okay,
क्लियर? तो इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक क्या कोई डाउट है क्या? हो गया ना? ओके, सो लाइक जो टाउ है वो रैंडमली जनरेटेड होता है, एंड G1 एंड G2 एक्सेप्टेड जनरेटेड पॉइंट्स है अक्रॉस द 3 एंटिटीज. सो कौन सा क्या ट्रस्टेड सेटअप पे हो रहा है जनरेट? ये जो अरे बना के निकल रहा है ना, ये पूरा जो वैल्यू जनरेटिंग थिंग है वो पूरा ट्रस्टेड सेटअप करेगा. ओके, सो ओके, बोल. सी जो प्रूवर था, प्रूवर ने ये कंप्यूट कर रखा था, ठीक है, ये इक्वेशन है प्रूवर के पास. ओके, अब वहां पे कौन सा एक्स डालेंगे? वो प्रूवर थोड़ी एक्स चूज कर सकता है. ओके, एंड वेरीफायर भी चूज नहीं करता, एक थर्ड पार्टी से चूज करवाते हैं. ठीक है, मलिशियस वेरीफायर भी नहीं होगा, मलिशियस प्रूवर भी नहीं होगा, एक थर्ड पार्टी पॉइंट चूज करके देगा. ठीक है, हाँ काइंड ऑफ. ठीक है, मतलब एक, हाँ वही थर्ड पार्टी एंटिटी पास करती है वैल्यू, जो है ट्रस्टेड सेटअप. वो ट्रस्टेड है बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड है ना, एंड हाँ एग्जैक्टली, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्टेड है. लाइक द ओनली थिंग इज कि वो एक नया एंटिटी है अदर देन प्रूवर एंड वेरीफायर, जो हर स्नार्क में यूज होता है ऑलमोस्ट. हाँ स्नार्क, हाँ चलो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए. G1 जनरेटर के 3 पॉइंट्स आ गए, एंड G2 जनरेटर के 3 पॉइंट्स आ गए. ओके, सो जो है, हाँ सो ये जब प्रूवर के पास जाएगा, ओके, तो ऐसे कंप्यूट करेगा, इनर प्रोडक्ट ले लेगा सीधा. ओके, विथ ये जो U2, ये क्या था, x² का कोएफिशिएंट था, U2 है, एंड U1 क्या था, लाइक x⁻1 का कोएफिशिएंट था, वो x⁻0 कोएफिशिएंट था. सो यू कैन डायरेक्टली टेक इनर प्रोडक्ट तो आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट. या इनर प्रोडक्ट. ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, वो बताता हूँ. ओके, सो हमने देखा था ना उसमें कि जो L था उसको G से मैप कर दिया था. ठीक है, लाइक हमने वो छोटा सा प्रूफ देखा था, पता है, जीरो नॉलेज का, विच वॉज इनएफिशिएंट एंड नॉट रियली सिक्योर. उसमें हाँ लास्ट फिर R को जो है G2 से मैप कर दिया था, और O को जो है हमने G1 से मैप कर दिया था, एंड लास्ट में हम लोग अलग से फिर G2 मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? ओके, तो बेसिकली बाइलिनियर पेयरिंग हो रहा है. ठीक है, G1.G2 जो है G12 हो रहा है. ठीक है, एंड हमने पहले ही यही इसलिए लाइक बाइलिनियर पेयरिंग रख रहे हैं बिकॉज बाइलिनियर पेयरिंग का जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे अब यूज नहीं करेंगे हम लोग. हाँ राइट, हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ ये जो, हाँ हाँ ये अब थर्ड वाला है. ठीक है, अब ये जो है, इसके पहले से देख ओके ओके ओके, कॉम्प्रिहेंड कर लो. मैं कह रहा था हाँ हाँ, ऊपर ने वो तीनों वो एक एरे पास किया ट्रस्टेड सेटअप को, तो उसमें नहीं क्या, वेट मतलब वो सिग्मा 2 सिग्मा 1 और G1 वाला नहीं, वो पास नहीं किया, प्रूवर ने कुछ नहीं किया. रुक, नहीं वेट उसने, हाँ हाँ वेट ये वेट, हाँ देखो प्रूवर का जो है यहाँ तक खत्म हुआ है. ठीक है, ये पूरा ट्रस्टेड सेटअप का ही पार्ट है. प्रूवर कुछ नहीं पास कर रहा. प्रूवर बस G1 था, उसने कोई रैंडम टाउ लिया और फिर उससे जो, हाँ वो रैंडमली जनरेटेड टाउ है. हाँ रैंडम, ओके सी, रैंडमली जनरेटेड टाउ है जो खुद जनरेट करते हैं ट्रस्टेड सेटअप, राइट? सो आफ्टर जनरेटिंग दैट, ट्रस्टेड सेटअप कैलकुलेट्स दीज टू, लाइक मतलब सिग्मा हाँ 2 सिग्मा 1 थीटा 1 वो टाउ स्क्वायर G2 और टाउ G2 बाकी हाँ, ऐसे कैलकुलेट वो करता है. ओके, करता है, एंड ऑल्सो और एक चीज कैलकुलेट करता है अपना h(x) टर्म के लिए. ओके, वही मैंने इधर भी लिखा है. ओके, सो ये भी कैलकुलेट करता है टेक्निकली, जो ये थर्ड वाला भी कैलकुलेट करता है. सो ये जो है, ये दो है u(x) के लिए, राइट? ये जो है वो v(x) के लिए. ओके, u(x) इंटू v(x) इक्वल टू w(x) प्लस हाँ h(x), हाँ 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 h(x) इंटू t(x). ओके, सो t(x) ऑलरेडी इधर कंप्यूट हो गया. ठीक है, ऐसे इनर प्रोडक्ट, ये क्या, लाइक क्या नहीं समझा? अच्छा गामा तो वो है लाइक h(x) के लिए अलग से कैलकुलेट किया. सी
जीवन पॉइंट ही है ओके सी हम लोग आरएचएस में सी इधर हमने पेयरिंग किया था ना वेट चिल कर देख हाँ बोल अरे बस एच के लिए चेंज करता है सिग्मा किसके लिए था थीटा किसके लिए था ओमेगा 1 मतलब लेफ्ट के लिए है थीटा राइट के लिए है एंड दिस इज वो एच के लिए जो नया डिफाइन किया हमने एच इनटू टी एच ऑफ एच इंटू डी एक्स जो नया डिफाइन किया है। इसलिए आप बस एच के लिए ही निकाल दो ये थर्ड वन एच के लिए है वो दोनों इसके लिए यू ऑफ एक्स एंड यू ऑफ वाई और फिर डब्ल्यू ऑफ एक्स के लिए हाँ वेट सी डब्ल्यू के लिए नहीं होगा वेट यू ऑफ यहाँ पे कर रहा हूँ वेट पता है यू ऑफ एक्स सी यू ऑफ एक्स है वी ऑफ एक्स है इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ एक्स ठीक है सी अभी हम लोग पेयरिंग करते हैं ओके सो इसके साथ जो पेयर हो रहा है वो जीवन वाला हो रहा है ठीक है जो हमने ये पहले वाला निकाला है ठीक है वो इसके साथ पेयर हो रहा है ठीक है लाइक इसको कुछ और डिनोट करते ओमेगा से डिफाइन कर देते हैं ठीक है ये ओमेगा से पेयर हो रहा है ठीक है ये थीटा से पेयर हो रहा है ठीक है ये थीटा से पेयर हो रहा है एंड ये जो है ये वापस ओमेगा से पेयर हो रहा है ठीक है ये भी ओमेगा से पेयर हो रहा है बिकॉज हम लोग एट द एंड ये पूरे साइड को हम लोग थीटा से पेयर करेंगे ठीक है सो पहले हम लोग सबको लाइक ये टेक्निकली गामा हो रहा है बिकॉज लाइक थोड़ा सा डिफरेंस किया हमने इस पे कि हम लोग इस पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा भेजते हैं विच इज टाउ टी भेजते भी नहीं है वो डिफाइंड है कन्वेंशन के हिसाब से लाइक टी ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस वन टू ठीक है वो हाँ डिफाइंड है टी ऑफ टाउ क्या है जैसे इसमें था मतलब कंप्यूट होता है लाइक टी इसमें हम लोग को एच ऑफ एक्स पता नहीं है ओके सी इसमें हम लोग को ट्रस्टेड सेटअप को कुछ भी नहीं पता ओके बट टी ऑफ एक्स ट्रस्टेड सेटअप को इसलिए पता है बिकॉज कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ने टी ऑफ हाँ एक्स ये कन्वेंशन के हिसाब से डिफाइंड है सी इसलिए हम लोग ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं लाइक वन से एन इसलिए हम लोग इंटरपोलेट करते हैं बिकॉज इट मेक्स सो मच थिंग्स इजियर राइट इनर प्रोडक्ट एच वाला मतलब एच ऑफ एक्स इनटू टी ऑफ एक्स पूरा रिप्लेस हो जाएगा उससे क्या वेट इनर प्रोडक्ट में एच निकालना वेट और इनर प्रोडक्ट एच लिखा था तो वो एच इनटू टी पूरा टर्म रिप्लेस होगा सिर्फ एच वाला टर्म रिप्लेस होगा मतलब सिर्फ एच वाला टर्म कैलकुलेट हो रहा है या फिर एच नहीं एच वाला टर्म कैलकुलेट नहीं हो अच्छा ओके सी इनर प्रोडक्ट के टाइम पे जब ओके सी जो इसके साथ जो भी टर्म्स एसोसिएटेड है ना लाइक जो है टी ऑफ एक्स ही एसोसिएटेड है उसको हम लोग ट्रस्टेड सेटअप पे ही कंप्यूट कर दे रहे हैं ओके सो जब हम लोग प्रूवर ये सब चीजें जब प्रूवर को जाएगी ना प्रूवर सीधा इनर प्रोडक्ट ले लेगा एच ऑफ एक्स के साथ सीधा इनर प्रोडक्ट ले लेगा बिकॉज टी ऑफ टाउ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इन द ट्रस्टेड सेटअप राइट क्लियर है एनी डाउट्स लाइक यही टेक्निकली